आज से हमारे शहर में शुरू हो रहा है कराची लिटरेचर फेस्टिवल और ये फेस्टिवल 18 फरवरी से तक जारी रहेगा। इस फेस्टिवल का मकसद है लोगों में किताब पढ़ने का शौक़ पैदा करना, किताब से उनकी दोस्ती जो है कराना, और इस तरह के फेस्टिवल्स पूरी दुनिया में होते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि लोगों के अंदर किताब की मोहब्बत पैदा की जाए, बट इसका ये मकसद भी है कि लोग गौर व फिक्र करें। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जिनको हम जैसे हमारे बड़े हमें सुनाते हैं, हम सुन लेते हैं, सिर्फ वैसा नहीं बल्कि ख़ुद भी हमारे अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए, और ये हमारे अंदर की क्यूरोसिटी को झंझोड़ना इसका मकसद है ताकि हम सवाल कर सकें। बिकॉज सवाल करना, टू क्वेश्चन, ये भी एक बहुत बड़ी पावर है जो कि हर कोई इंजॉय नहीं कर सकता। दुनिया भर में बेशुमार ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जो नौजवानों में अदब का रुझान पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कराते हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि बिकॉज योर लिटरेचर कीप यू ग्लूड टू योर कल्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लिटरेचर के हवाले से बात करें। एक ऐसा इदारा अमेरिका में भी है और इस इदारे का नाम है अर्बन वर्ड। 1999 में इस इदारे की बुनियाद माइकल सेरो ने रखी थी, और इसका जो इदारा है ये अर्बन वर्ड नौजवान शायरों को अपना फ़न दुनिया के सामने पेश करने का मौका देता है। जैसे कि आपको पता है कि थ्रू पोइट्री किस तरीके से आप अपने एहसासात, अपने जज्बात जो हैं ये लोगों के सामने रख सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों पे तो ये आपके एक्सप्रेशन होते हैं, और बहुत सारी जगहों पे आपका गुस्सा निकालने का भी एक बहुत बड़ा मीडियम है। अच्छा, इस इदारे के तहत हर साल हम देखते हैं कि 50,000 से ज़्यादा नौजवान राइटर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है, और 75 से ज़्यादा शहरों में इस इदारे ने अपने दरवाजे हर उस नौजवान के लिए खोले हुए हैं जो अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं। और उन्होंने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नेशनल यूथ पॉइंट जो है पोइट लॉरिएट प्रोग्राम भी अमेरिका में मुनक़िद किया, और अब यही प्रोग्राम नौजवान पाकिस्तानी शायरों की हौसला अफजाई के लिए आइंदा सितंबर में यानी कि सितंबर 2024 में पाकिस्तान में मुनक़िद किया जाएगा। और इस इवेंट में नौजवान शायर हैं वो हम देखेंगे कि उनसे हमारी मुलाकात भी होगी। और आज अदब और नौजवानों के चंद सबसे बड़े दोस्तों में से ये एक भी हैं माइकल सेरो, और साथ में डॉक्टर सारा जैदी जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है नेशनल पोम्स प्रोग्राम की, और मेरे मेहमान भी हैं। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम सारा एंड माइकल, वेलकम टू माई शो एंड वेलकम टू पाकिस्तान, एंड आई बिलीव इट्स योर फोर्थ विजिट टू Pakistan, so how have been your experience in Pakistan? Beautiful. I mean, it's amazing to be here, to be part of a culture that is so enriched by poetry. Poetry's lived and thrived here for thousands of years, and so to be able to take my career as a poet from the US and to be able to experience the thriving poetry culture here is just a great opportunity and an honor. Very enriched culture in Pakistan as well. So Sarah and Michael, please tell us about this program, which is the National Youth Poet Laureate program. Well, I mean, we're here once again. We were here in August to kind of launch it, but recently जो है submission period जो है खुला है for young people to submit their poems, 1 to 2 poems, into the National Poem Project. And उससे हम 20 बच्चों को, we're going to choose kids from 16 to 25, not kids, but young adults from 16 to 25. एज में चाहूँगी सारा आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में बात करें ताकि जो हमारी मैसेज है वो समझ पाए कि उनके लिए कितना ज़बरदस्त और शानदार प्रोग्राम आप लोग लेकर आए हैं। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो हमारी कोशिश है कि बच्चे जो हैं from 16 to 25 वो अपने poems को, अपनी शायरी को सबमिट करें at nationalpoem.org, and National Youth Poet Laureate Program जो है basically एक कंट्री का या सिटी का या स्टेट का, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में हर सिटी, हर शहर, हर स्टेट जो है वो डेजिग्नेट करता है कि हमारे एक यूथ पोएट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है शायरी का उस जगह की। बट माइकल कैन एक्सप्लेन मोर। Yeah, I mean it's grown into this huge national phenomena where we have poet representatives from almost every state in the country, and they're really the voices of young people. They speak about the issues that are important to them, and for us it's really about creating a platform for them to be heard. So they've been heard on almost every important platform in the US. They've been on all the major news stations. They've performed at all of the major institutions in our country. And this is the first country where we've taken that program internationally. So we're really proud and honored to have this project here in Pakistan. Also, I believe this program will empower the youth as well. Absolutely. सिर्फ उनकी जज्बात नहीं है on display. It's really their histories, उनकी experiences, उनकी life experiences. And हम ये कोशिश कर रहे हैं. We believe actually कि जो उनकी experiences हैं
they're valid, they're important, and they're something that are necessary and powerful. क्योंकि हमारे यहाँ हमारी यूथ को लगता है कि उनको कोई सुनता नहीं है, so basically वो जो उनका एक उनको perception है इसको break करना है कि नहीं, your voices never go unheard. तो आपको पोइट्री के थ्रू यू कैन ऑलवेज लाइक अपने लोगों के सामने अपने ख्यालात जो हैं, अपने एक्सप्रेशंस और अपनी फीलिंग्स हैं वो रख सकते हैं. हाउ मेनी phases are there in this program? So there's two major phases. The first phase, we are in the submission period now. So February till the end of March, all young writers from across Pakistan can submit 1 to 2 poems. From that phase, we take the top 20 poets, and they get to be mentored by esteemed writers from all across Pakistan. And from that group of 20, we pick 2 winners, one speaking in Urdu and one speaking in English. And then the real grand prize of this is that not only will they be named the first ever Youth Poet Laureates of Pakistan, but we get to take them to the United States to perform at the Kennedy Center in Washington, D.C. अच्छा, यहाँ पर लोगों का सवाल ये भी होगा कि the poems has to be in English or in Urdu. Because when we are talking about the culture, तो हमारा culture तो इसलिए उर्दू है ना कि हम अपनी ज़बान से कितना connected हैं. Absolutely, and हमें ये इस चीज़ की concern थी, and we want to acknowledge the जैसे Michael कह रहा था कि पाकिस्तान में there's such a culture of shairi and poetry. It's within our culture. So that, acknowledging that Urdu में भी हो सकता है या English में भी, or both. If they want to do a hybrid poem, वो भी कर सकते हैं. So in first phase, we have to submit our poems. Yes. And in second phase? In second phase, they will be mentored. And then from that group of mentored poets, we will choose one for each language. So those will be the national winners. And जो mentors करेंगे वो 4 महीने में they'll basically help them, उनकी basically help करेंगे to develop their portfolio. So उनका portfolio बनाएंगे so that they have something by the end of that phase. वो judge होगा. There'll be esteemed judges. Maybe आप एक judge हो सकती हैं हमारे लिए. We would love that. Yeah. And then we'll basically determine then one Urdu poet and one English poet. अच्छा सारा, जैसे कि आप जानती हैं पाकिस्तान में पोइट्री के there are so many genres to it. Sure. But in English we only know like there's one poem. We don't have ghazal. Like in Urdu we have ghazal, we have ठुमरी, nazm है हमारे पास. So उसमें फिर आप कैसे वो distinguish कर सकेंगे? जो कुछ भी, it can be free verse. जैसे यहाँ पर it doesn't have to be a nazm, it doesn't have to be a ghazal. जो कुछ भी, nazm भी, ghazal भी, free verse भी. I don't know उसको free verse को क्या कहते हैं यहाँ पर, but free like prose को भी वो भी submit कर सकते हैं, and from there they'll be judged by an esteemed group of mentors. So वो mentors जो हैं Urdu poets भी हैं, काफ़ी established Urdu poets हैं, तो वो जो हैं वो judge करेंगे और वो फिर हमारी मदद करेंगे. They're going to help us basically choose these 20 finalists. अच्छा, इस एक बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम से जहाँ पर आप कल्चर के हवाले से बात करें, बिकॉज देखिए कल्चर किसी भी कौम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जब आप किसी भी कौम की कल्चर के हवाले से बात करते हैं तो आप इस तरीके से उस कौम को, जो उसकी यूथ है, उसको एम्पावर कर रहे होते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यूथ को एम्पावर करें, उसके कल्चर से कनेक्ट करें. इस प्रोग्राम के थ्रू आपको कैसा लगता है कि मतलब क्योंकि इट्स अमेरिकन प्रोग्राम, तो पाकिस्तान और अमेरिका ये दोनों कैसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोग्राम? How can we connect both Pakistan and America? Well, over the winter, they actually were able to take workshops with Pakistani American writers. So the celebrated young writers that we have there were able to take writing workshops with the youth here. So the idea is to bridge cultures. It's a great way for cultural diplomacy. That's why we're sponsored by the consulate and the embassy. And it's just a universal language. So everyone can come together under the umbrella of poetry and really share what's important to them. And those cultural differences actually end up being things that tie the young poets. And that's what's amazing about the program. And we're seeing these poets be celebrated all over the country, and we really want to bring that type of energy here to enliven the poetry culture. Poetry doesn't have to just exist in universities and colleges. We believe it exists in the homes, in the schools, and if we create a platform for them to be heard, that's really the most important thing. You also written so many poems. Ghazal. 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 Wow. You pronounce it right. So I would really want you to share it with my audience. Please recite one of yours, Ghazal.
I don't have it memorized, but I can read a ghazal. That's perfectly fine. Is that okay with you? Yeah, that's perfectly fine. So the first part is in free verse, but it ends with a ghazal. It's called Poem for Pakistan that ends with a ghazal. Wow. I'd like to offer you a poem that does all of the beautiful things that poems do in Pakistan. But I'm American. But I am knee-deep in a tongue not as knife-sharp as Urdu, not as delicate as yours, more elbows than eyelashes. What I have to give you is my utter attempt at dude. What I have is a pint of milk for the foot of my bride. And when our daughter was born, heaven bloomed from her soul. That's what you've given me, Pakistan. A wife, a child, Jannah. I fell in love so deep that I embraced all of it. I was so ready to give, and all I did was get. Michael Ka Pakistan, where the hand-woven rugs are rolled out for me, and everywhere I look, there is poetry. But there are no sacred texts revealed in my mother tongue, so this is why I struggle with the ghazal. Here, the poems have filled the air for thousands of years. O Pakistan, there is so much muscle in your ghazal. Wow. Where I'm from, the history of verse is relatively terse. Surely I'll have trouble with the ghazal. The letters I work with, hard on the surface, they don't do this effort surface. It's so difficult for me to be subtle with this ghazal. While your verses are nuanced and shared with a purpose, how can I not be puzzled by the ghazal? These traditions take time, but my New York state of mind, I boldly think I can hustle this ghazal. But there's no way I can do it. Pen verses as fluid as Fez, Iqbal, Shakur, and the Sufis. Please forgive this attempt, a sorry rebuttal, to offer my praise of your beautiful ghazals. Wow, that's beautiful. That's basically, I don't know if I should call it a ghazal or not, but that's basically a love letter from Michael to his wife, to his daughter, and to Pakistan. Yes. And it was beautiful. Thank you very much. Now say gha. Ghazal. I'm working on that. I'm working on that. Thank you so much, Thank you Michael. very much. Thank you so much, Sarah, for being on my show. And I just love this ghazal. बहुत प्यारी लिखी हुई थी और ये बेसिकली एक लव लेटर था माइकल की तरफ से एक अमरीकी शहरी की तरफ से पाकिस्तान के लिए, जो कि आप हमारी ज़बान उर्दू है उसकी तारीफ़ कर रहा है, उसकी रिचनेस के वाले से बात कर रहा है और ये बता रहा है कि पाकिस्तान ने इस न्यूयॉर्कर को कितना कुछ दिया है, एक खूबसूरत बीवी, खूबसूरत बच्चा, और जो कल्चर के हवाले से बात करें, जो उर्दू के हवाले से बात करें, जो लिटरेचर, जो अदब के हवाले से बात करें, सो इट्स ऑल अबाउट इट. मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा. जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि हमारे साथ एक ऐसा कपल मौजूद था जो कि पाकिस्तान में लिटरेचर के हवाले से, लिटरेचर के फ़रोग़ के लिए काफ़ी काम कर रहा था. और अब ज़रा